Hello students, welcome in class 11 and we are discussing the chapter number 19, rectification of errors. And in this chapter we are studying that how errors are finding and after that how can these are rectified. And today we will discuss that how can rectification of errors can be done when trial balance is tally and trial balance does not tally and balance is given in suspense account. हमने जो बैलेंस था, जो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, उसका बैलेंस हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया and our trial balance will be tallied. And then how can we rectify the errors with the help of suspense account? Let's understand question number 24. Trial balance of Madan did not agree and he put the difference of suspense account. He discovered the following error. Number 1, sales return overcast by 800. सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है वो 800 से ओवरकास्ट हो गया है. दैट मीन्स ओवरकास्ट मीन्स टोटल एक्सेस हो जाना और सेल्स रिटर्न टोटल इज ऑलवेज डेबिट. तो इसका टोटल ओवरकास्ट हो गया तो रिवर्स चले जाएंगे. दैट मीन्स जो टोटल होता है सेल्स रिटर्न बुक का वो डेबिट होता है हमेशा. तो अब इस टोटल को ओवरकास्ट करने के लिए, ओवरकास्ट की रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें सेल्स रिटर्न बुक को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो सस्पेंस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. We write the narration. Sales return book is overcast. Second entry is purchase return to Sahu rupees 2000 were not posted to his account. परचेज रिटर्न थी साहू से, साहू को हमने 2000 की परचेज रिटर्न दी थी, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज क्रेडिटेड. देन साहू को क्या करना पड़ेगा, डेबिट. साहू टू परचेज, साहू टू सस्पेंस अकाउंट. क्योंकि हमने परचेज रिटर्न में तो रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन साहू की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था और परचेज रिटर्न में पार्टी इज ऑलवेज डेबिटेड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, next is goods purchased on credit from Narula rupees 4000 through taken into stock but no entry was passed in the books. हमने गुड्स जो थी वो क्रेडिट पर नरूला से परचेज की थी, हमने उसकी एंट्री नहीं की थी. नाउ वी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एंट्री बिकम परचेजेस अकाउंट डेबिट. जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरूला. Amount is 4000. Next transaction is installation charges on new machinery purchased rupees 500 were debited to sundry expenses account as 50 rupees. यहाँ पर 2 मिस्टेक्स हैं. एक तो हमने उस इंस्टॉलेशन चार्जेस न्यू मशीनरी का था, मशीनरी अकाउंट में डेबिट करने थे बट इज डेबिटेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस. ये बाय मिस्टेक डेबिट हो गए हैं, इनको क्रेडिट करना होगा बट दीज आर डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 50. इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ 50 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट. सो जर्नल एंट्री बिकम मशीनरी अकाउंट डेबिट. जब भी न्यू मशीनरी पर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आते हैं इट इज एडेड इन द एसेट मशीनरी अकाउंट 500 रुपीज टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 50 रुपीज एंड टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 450. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज rent paid for residential accommodation of Madan, the proprietor, rupees 1400 was debited to the rent account as 1000.
हमने मदन प्रोप्राइटर के लिए उसके एकोमोडेशन के लिए रेंट पे की है, इट इज कंसिडर्ड ड्राइंग्स, बट बाय मिस्टेक इट इज डेबिटेड इन रेंट अकाउंट। तो अब रेंट अकाउंट की रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें रेंट को क्रेडिट करना होगा और ड्राइंग्स अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, नाउ वी डेबिट द ड्राइंग्स अकाउंट। देन जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री बिकम drawings account debit rupees 1400 and rent is by mistake debited, now it is credited by 1000 and difference 400 is given to the suspense account. So it is the rectification of the error. So now we prepare the suspense account. In this question there is no given difference, so we prepare suspense account. In first entry, suspense account debit to sales return. Suspense account is debited, so we record in debit side to sales return account by 800, and in second entry, Sahu debit to suspense account. Suspense account is credit by Sahu rupees 2000. Next is the third entry, purchases account debit to Narula. There is no link of suspense account. And in next entry, machinery account debit to sundry expenses to suspense account. Suspense account is credited by machinery account and amount is written 450. And last, drawings account debit to rent account to suspense account. This suspense account is credited, we record in credit side by drawings account and amount is rupees 400. Now we total the account, total become 2850 and here is 800, so it is called difference between trial balance. It is called opening difference in trial balance, that is 2050. Next, question number 25. There was an error in the trial balance of Mr. Steele on 31st March 2020 and the difference in the books was carried to a suspense account. On going through the books, you find that rupees 5400 received from Mr. A was posted to the debit to his account. हमारे को 5400 मिस्टर ए से रिसीव हुए थे, बट माय मिस्टेक हमने इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया. जब भी हमें कैश रिसीव होती है वी विल क्रेडिटेड द पार्टी अकाउंट, बट नाउ वी डेबिट. देन रेक्टिफिकेशन एंट्री बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट. पार्टी जो है गलती से डेबिट हो गई है, अब इसको क्रेडिट कर देंगे. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए. यहां पर मिस्टर ए को हमने 5400 से क्रेडिट करना था, बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया. नाउ इट इज क्रेडिटेड बाय द डबल अमाउंट टू रेक्टिफाई द एंट्री. Next entry is the 1000 being purchase return over posted to the debit of purchase account. 1000 rupees की purchase return थी, it is debited in the purchase account. So purchase return is always debit, purchase return is always credit. So first of all we record purchase return by 1000 and purchase book is by mistake debited. Now we rectify the credit purchase account to rectify the error by 1000. Then there are two credit and no debit. We write here suspense account rupees 2000. Next is the discount received rupees 2000 were posted in the debit of discount account. हमारे को डिस्काउंट रिसीव थी, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड but it is recorded in debit side, that means it is considered discount allowed. Same procedure we will follow. Discount received is always credited. First of all we credit the discount received by 1000 rupees.
and this discount is debited. That means discount allowed. By mistake it is debited. Now we correct the entry by credited by 2000, and debit account is suspense account rupees 4000. Next entry is rupees 2740 paid to repair for motor car was debited to motor car account as rupees 1740. हमने 2740 रुपीज मोटर कार की रिपेयर पे दिए थे. इट इज एंटर्ड इन द रिपेयर अकाउंट, बट बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड इन मोटर कार अकाउंट. सो वी रेक्टिफाई दिस एरर. Repair account debit rupees 2740 and motor car account is debited. Now it is credited and it is debited with the 1740 amount. It is credited with same amount and difference in suspense account 1000 rupees. So it is the rectification of this error. Next entry is 4000 paid to B was debited to A account. हमने B को 4000 रुपीज पे किए थे, बट बाय मिस्टेक इट इज डेबिटेड टू A account. B account is not debited. Now debit rupees 4000 and A is by mistake debited. Now it is credited with the 4000 rupees and it is rectification entry B debit to A. Now we will prepare the suspense account. First entry suspense account debit to A. Suspense account is debited, so we write here to A rupees 10,800. In second journal entry rectification entry suspense account debit to purchase account to purchase return, and suspense account is also debited to purchase account 1000 rupees, to purchase return account rupees 1000. In third entry suspense account is debited with to discount received account rupees 2000 and to discount allowed rupees 2000. In next entry suspense account is credited by motor car rupees 1000. Then its total become 16,800. Total become 16,800. Now we balance. We write here by difference in trial balance rupees 15,800. I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.